honored to be a part of this august gathering of noteworthy academic luminaries and administrators who have served the Department of Higher Education, Government of J&K in various capacities. I'm also thankful to Professor Baba Sahab, who has given me this opportunity to read the book and review it. That really humbles me down. Now, Baba Sahab, as known to all of us, has served the Department of Higher Education, as I come to know about it, for a span of 26 years. Guest upon Professor Mohammad Afzal Zargar Sahab, a well-known teacher and an academic administrator. Special guest, Professor Nasir Iqbal, the Registrar of University of Kashmir. Few of you might be knowing that we were in the same hostel. He was my batchmate also. Special guest and other dignitaries, Professor Yasin Saab, former director, Professor Kabu Saab, and other faculty members. Maybe I may not be naming each and everybody, I am sorry for that, but believe me, I may not wear my heart on my sleeves, but I feel I have reverence and regards for each and every one of you. My colleague, friend, Professor Nasir Iqbal Sahab, the Registrar of the Kashmir University, Professor Ghulam Jalani Sahab, the principal of this reputed college, SP College, former principals, colleagues who have been associated with the Higher Education Department, Professor Yasin Sahab, Professor Bakal Sahab, Dr. Yasmin Kausari, Professor Lee, other colleagues who are presently associated with the Higher Education Department or have been associated with the Higher Education Department. Professor Muhammad Aslam Baba Sahab, my friend of a long-standing time. Above all, my dear students, Assalamu alaikum to all of you. Well, at the outset, let me congratulate Professor Baba Sahab for coming out with a compendium, with a book, which ordinarily is not an easy job to be done. He has labored into the compiling of the data, compiling of the inputs and information, and has come out with a beautiful book. Development of the Science Through Ages. The name itself is very attractive. In the hall, we have a collection of Professor Kabu Sahab, Professor Yasin, Professor Bakal, and then there were principals of this, former principals of this college. A wonderful place, always to share a dais with. For me, it's always a pleasure. And good afternoon and assalamu alaikum. Firstly, let me thank Professor Aslam Baba Sahab for having invited me on this podium today to be on the function of release of this book, Development of Science Through Ages. I had an opportunity to see the soft copy of it, which I had requested Professor Baba to send me, although it was to be released today. And accepting the reviewer, the book is not supposed to be read by anyone before the date of the release. But I did, show my confidentiality, and I wrote that it will be a kind of a classified document with me till it gets released. And I congratulate Professor Baba for having taken this whole labor and laborious, time out of his schedules. And also, I'm told right now on the dais, he's a cancer survivor. And even after that, he has written this book. So I congratulate you, Professor Baba. From University. Professor Sarwar Sahab, my friend, my mentor, Professor Abdul Zargar Sahab, Professor Mohammad Aslam Baba Sahab, the principal of the college, Professor Ghulam Jalani Sahab, the publisher of this book, Mir Rashid, care of Amicus Publishers, Srinagar,
before I throw a light on this book, I know that it was 98. I was doing PhD at the University of Kashmir, and I had a chance to meet Professor Aslam Baba Sahib. He was that time coming to give some lectures in the Department of Physics in solid state, because that time there was no any teacher related to the solid state physics. I found him very energetic while teaching, while discussing. Today, now almost 26, 27 years have passed, but I don't find any change in Professor Aslam Baba Sahib. There is a law in physics that everything changes with the passage of time, but I think in Professor Aslam Baba Sahib this law fails. Whatever I have seen him as an energetic person, he continues to be same, and we pray to Almighty that he will continue to be saved for decades to come. Some of your review about the book. I actually handed over this book when I was the head of the department at Kashmir University. I have reviewed one of the chapters of the book on superconductivity and the nanotechnology. What I find that although Dr. Kutsia has given a very good review about this book, but it's my legitimate duty to say something about what actually I can see that this book elegantly captures its essence, development of science through ages. And it's not merely a collection of facts, but a well-organized overview of scientific knowledge humankind has gathered together over millennia. It serves as a ready reference, I can say, providing insight into scientific happenings and remarkable contributors who have shaped our understanding of the world. ऑफ साइंस थ्रू एजेस किताब आज उसकी रस्म रोनमाई हुई। इस किताब में 2 सेक्शंस है। पहले सेक्शन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कदीम जो है हमारे ज़माने में साइंटिस्ट ने, सिविलाइजेशन ने, कौमों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और कैसे ये इल्म जो है साइंसी उलूम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें ये हिस्टोरिकल फिर पहले सेक्शन में डिस्कस किया है, जहाँ से शुरू करके स्टोन एज से मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में, जिसमें इंडियन का कंट्रीब्यूशन है, एंशेंट मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन है, ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद ये यूरोपियन जो आ गया रेनेसांस के बाद, और इसको कंप्लीट किया है 2022 तक। जो मॉडर्न साइंस है इस वक्त कहाँ तक उसको कंप्लीट किया है, उसका हिस्टोरिकल जो है पस मंज़र इस किताब में किया है। दूसरा सेक्शन जो किताब का है वो है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़, यानी जो टेक्नोलॉजीज़ फिर इमर्ज हो गई साइंस से, और उसमें जो पॉलिसीज़ एक सेक्शन में नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एजुकेशन वो भी डिस्कस किया है। जो टेक्नोलॉजी है तकरीबन 30 टेक्नोलॉजीज़ इसमें डिस्कस की है, स्टार्ट फ्राम जो हमें स्पेस पे भी किया है, और स्पेस से कंक्लूड करके हमने मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में ये सीक्वेंस के हिसाब से ये सारी टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्वांटम थ्योरी है, रिलेटिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी है, मटेरियल साइंस है। ये सारी जो है आज के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किताब की अहमियत इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो जिस स्टूडेंट को फिज़िक्स पढ़नी होगी उसको ज्योग्राफी का भी इल्म थोड़ा सा होना चाहिए। इसी तरह अगर केमिस्ट्री का भी होगा और उसके साथ ही बॉटनी का भी होगा, मेडिकल का भी होगा। इस तरह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट के लिए ये किताब मुफीद होगी। वो एलिमेंट्री लेवल पर वो समझ सकता है कि आखिर रिलेटिविटी क्या कहता है, इस फिज़िक्स के जो टॉपिक्स आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कहता है, लेज़र ऑप्टिक्स क्या है, लेज़र्स क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, और इस तरह से मुख्तलिफ जो है स्पेस में क्या हो रहा है, अर्थ क्या है, ओशनोग्राफी क्या है, समंदरों के बारे में है, जोग्राफी के बारे में है। इवन इस किताब में एग्रीकल्चर भी कनेक्ट किया है, और मेडिकल टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी किया है। किताब 921 सफ़ात पर मुश्तमिल है और तकरीबन 40 पेजेस इसके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स उसमें डिपिक्ट किए हैं। तो किताब जो है स्टूडेंट्स के लिए मुफीद है और ये 2022 तक अपडेटेड है। इस किताब
کہ کافی لکھنے میں جو نوبل پرائز ہے فزکس کیمسٹری باٹنی وہ بھی 2022 تک کمپلیٹ کیا ہے. پھر کرونالوجی آف ایونٹس بھی کیا ہے. مسلم یہ جو ہے کنٹریبیوشنز جو ہے سائنٹسٹ کا اکراس دی گلوب ان کا اجاگر کیا ہے. اس میں لیٹسٹ جو ہے اسٹیفن ہاکنگ تھا وہ کیا کہتا ہے, کاسمالوجی کی جو تھیوریز جو ہے یونیورس کی جو تھیوریز وہ کیا ہے. الٹیمیٹلی اس میں کنکلوڈ کیا ہے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہا ہے کہ کوئی بھی تھیوری جو ہے سائنس کی وہ مکمل نہیں ہے. آج نئی تھیوری ہوتی ہے, نئے کوشچنز آتے ہیں, نئے ڈسکشنز ہوتے ہیں, 20 سال بعد کچھ اور نئی تھیوری آ سکتی ہیں. جہاں جہاں ہم کامیاب رہتے ہیں کسی تھیوری میں, جہاں ہم اس کو کہ اس کی آبزرویشن صحیح ہے, ایکسپیریمنٹلی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, وہ پارٹ آتا ہے ٹیکنالوجی میں. مگر جو پارٹ ابھی ڈسکشن میں ہی ہے کہ کیسے بنی کائنات کیا ہے, اس پر ابھی تحقیق چل رہی ہے, نئی نئی تھیوریاں آ رہی ہے. لہٰذا دس از ان اینڈنگ پروسیس. اور ہر سائنس کی جو بات ہے وہ اپنی باؤنڈری کنڈیشنز میں ہوتی ہے, اور اس میں یہ جو سائنس کی باتیں جو ہے, سائنس کی تھیوری جو ہے, سائنس کے لاز جو ہے, یہ چیلنجبل ہے. ان کو کسی بھی وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی حد ہوتا ہے. جو یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں, وہ ہمارے انہی قدیم سائنسدان کی دین ہے جنہوں نے کام کیا ہے. اور اسٹارٹ میں کام ہے اسی سائنٹیفک کانسیپٹس کو آگے چل کر آگے بڑھا کر ان ٹیکنالوجیز کا وجود آ گیا. کہا جاتا ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. کوئی بھی سائنٹیفک اچیومنٹ جو ہے, کوئی بھی ترقی, یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. اس پر بہت سارے قدیم سائنسدان نے کام کیا ہے, اپنے دن رات کیے ہیں, تب کہیں جا کر یہ چیزیں جو یہ ٹیکنالوجیکل چیزیں جو ہے ہمارے آج تک پہنچی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں کہوں کہ اگر یہ کتاب میری اسٹوڈنٹس کو کسی طریقے سے مفید ثابت ہوگی, میں اس میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا. تھینک یو.